हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जेमती कि तुमने थंबनेल जानि पारथुबो एबे हमें कंप्यूटर रे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तमरो जदि सिलेबस तुम देखिबो तुम सिलेबस लिखा है कंप्यूटर स्लैश मरा है कि इंटरनेट अवेयरनेस। तो एथिरे एक्जाक्टली लिखा है तुम कौन कौन पढ़िबार अछि, मैं डिटेल्ड सिलेबस देनी किंतु एथर तुम सब गला। ठीक अच्छे। तो आज आम जो इंटरनेट अवेयरनेस रहीगला तार गोटे भास्ट माने सिन जी गोटे भास्ट पोर्सन आम तार बहुत गुड़े क्वेश्चन डिस्कशन करबा। जेते गुड़े क्वेश्चन पॉसिबल हबो करदेबा डिस्कशन। जदि एथिरे किछि डाउट हैला, किछि क्वेरी रहिला बा को कांसेप्ट जानि पारुन क्वेश्चन कला बेले जे एटा को कांसेप्ट रो आछि त माने कहले मु तार प्रॉपर नोट तो मान को पठै देबी। ओके, सो विदाउट डूइंग एनी डिले चला हम क्लास स्टार्ट करबा। जो माने चैनल नुआ अच्छो चैनल को सब्सक्राइब करि पारिबो। जदि क्लास भल लागुछि यू मे लाइक द वीडियो आ हम टेलीग्राम बा इंस्टाग्राम हैंडल जॉइन हे कि निजे क्वेरी रिजॉल्व करि पारिबो। ठीक अछि, चला स्टार्ट करबा क्लास। देखो सब फास्ट क्वेश्चन तमर देला the vast network of computers that connects millions of people all over the world is called what? तमे इंटरनेट विषय रे कोन जानछो? इंटरनेट जिंसटा कोन? ए जो तमर देला लैन वेव ए जो जिंस सब देला एथिरे व्यस्त होबनी, एथिरे किछि व्यस्त होबा नहीं। यार आंसर हो तमर इंटरनेट टी छाडी देछि। इंटरनेट होछि राइट आंसर। इंटरनेट गोटे एमती भास्ट नेटवर्क जो जहा द्वारा की मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हो पार्छन, चाहे तुम सोशल मीडिया थ्रू रे हो चाहे तुम ब्राउजिंग थ्रू रे हो। इंटरनेट गोटे एमती नेटवर्क जे कि सबू माने सबू जगार लोक कनेक्ट करई पारुची। तो भास्ट नेटवर्क ना होची इंटरनेट। ओके, एई मान विषय में आपको पढ़िबा। लैन मैन वन हे गला आउ वेव कोन, हाइपरटेक्स्ट कोन, एचटीटीपी कोन, एचटीएमएल कोन, ई सब हम थ्रू आउट द क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ डैश। इंटरनेट रो डेफिनेशन पचाउछि हमको। जो माने थ्योरी पढ़ी थिबो से माने यारो डेफिनेशन पढ़ी थिबो। कहला सॉफ्टवेयर बंडल, वेब पेज, वेबसाइट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। एना आरो ही जणा पड़छि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला द इंटरनेट अलाउज टू कोन अलाउ करे? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल द अबव, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल पठेबारे हेल्प करे, ठीक कथा। वेब पेजेस को व्यू करिबारे हेल्प करे, एटा भी ठीक कथा। कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एटा भी ठीक कथा। तो हमें ऑल ऑफ द अबव रे क्लिक करबा। सबतक ऑप्शन ठीक अछि आ ऑल ऑफ द अबव अछि, तन करी ऑल ऑफ द अबव हमर हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड कोन? जो स्टोरेज ईमेल मैसेज जो जगह स्टोर हुए ताकू कोन कहंती? जे तुम मेल करिथिबो देखिथिबो तुमरो लेफ्ट साइड कॉर्नर रे गोटे एमती तीन टिके गार थाए, तेरे क्लिक कला परे सब ऑप्शन गुडा आसे। तार तुम कोन कोन थाए, कोन कोन देछि तुमको? देछि फोल्डर, फाइल, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क। तो तुमरो मेल बॉक्स कोड थाए, तुम थाए से लिखा है कि प्राइमरी, स्पैम, बीन एमती सब थाए। बीन न थाए बोतरे स्पैम थाए। तो तुमरो मेल बॉक्स से जीवो राइट आंसर। मान जो प्राइमरी मेल गुडा जो जगह मेल गुडा जो रहउछि हमरो स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड मेल बॉक्स। तापर आसो an email address typically consists of a user id followed by a dash sign and domain name that manages the user's electronic post office box। अच्छा, कहला ईमेल एड्रेस जो थाए मनकर मो मेल आईडी मनकर कहूची misra.banaja@gmail.com मनकर एग्जांपल। ए जो misra.banaja एटा हगला हमर यूजर आईडी @gmail.com एटा होची डोमेन टाइप का जीमेल पई, बुझिला? तो कोथरा अलग होचन से माने @। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोची अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज व्हाट? अच्छा, जो ईमेल ता हमर कोन तुम देखो जो माने मेल यूज करथिबो से माने क्वेश्चन आंसर करि परबे। एटा किछि बड़ रॉकेट साइंस क्वेश्चन नो। जंक बोली किछि ऑप्शन न थाए, तरे हाइपरटेक्स्ट बोल न थाए, हॉक्स बोल न थाए, भाइरस बोल न थाए, स्पैम थाए। स्पैम तो माने यूज भी करथिबो बेले मेल आसेनी हमकु जेतो बेले हमें कोन स्पैम चेक करे, स्पैम रे किछटा मेसेज बेले बेले रहि जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन गासो द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम। को गोटे प्रोग्राम को जो सीक्रेट कोड हमको एक्सेस दिए से सीक्रेट कोड को कौन कहती? पासवर्ड कहते ऑब्वियसली। क्यू तो नुह, क्यू तो नुह, हेल्प तो नुह, पासवर्ड। ये टर्म संगे तुम अक्वेंटेड थी ऑलरेडी, जेहेतु आम बहुत इंटरनेट यूज करुचे तो आम किसी जिन संगे तो अक्वेंटेड हो गले, मैंने आम डेली लाइफ में यूज करुचे बट मे बी तार प्रॉपर डेफिनेशन आम जाने। ओके, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू गोटे मेल सेंड करबा को जिन सहित सिमिलर। एटा तुम एसबीआई क्लर्क एग्जाम रे पढ़ितला। राइटिंग अ लेटर, ड्रॉइंग अ पिक्चर, टेक राइटिंग अ लेटर ऑब्वियसली। गोटे ईमेल सेंड करबा गोटे चिट्ठी पठेबा भलिया गोटे कामटे, हां ना नहीं? कहला डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड इन टू द वेब।
डॉक्यूमेंट्स गुड़ाक कौ फॉर्मेट को कन्वर्ट करके आम वेब रे पब्लिश करते देखो आम तो इंटरनेट रे कोई गोटे जिन देखुचे तुम गोटे मार्कअप लैंग्वेज तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही फॉर्मेट रे थाए डॉक फाइलटा जो खोले दैट मे बी इन डॉक फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट बट जो आम देखुचे जो व्यू करुचे जो वेब रे सेटा हूँ आमर HTML बा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट रे कन्वर्ट होगी थाए नेक्स्ट ऑप्शन देख कहला HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट एबे जस्ट कहली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखि दियो कोठी अछि ऑप्शन नंबर 3 रे अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज व्हाट इंटरनेट रो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कोन HTML जावा फ्लैश नो एयुटिक TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एटा होछि ट्रांसमिशन एटा देखि दबो एटा कोन सम प्रोटोकॉल ओके नेक्स्ट देखो कहला which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web based information अच्छा कहला भितर किए से which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that access web based information अच्छा web based information को access दिए XML extensible markup language एटा आउ HTTP तमरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल DML टिके चेक करिवो HTML होचे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके तो HTTP फॉर्मेट ही एक्सेस दिया हमको तुम देखि भी थो इनको सर्च करा बेले HTTP :/ एमती थाए कोन वेबसाइट गुडा www स्टैंड्स फॉर एटा बहुत फेमस क्वेश्चन बहुत थोर एग्जाम रे पढ़ी छी भी यू मस्ट नो कोन हबार आंसर वर्ल्ड वाइड वेब सब तक www विजेट देखिल तुम आराम से काटिबा थी किसी प्रॉब्लम होबनी वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट जेकोसी वेबसाइट होम पेज कौन तुम नॉर्मली भी कोई जगह क्लिक कला जो तुम जेकोसी जगह फॉर्म फिलअप कर कौन गोटे होम थाए गोटे मेनू थाए एम थाए ना नहीं तो से होमटा को पेजटा क्लिक कला पर जो फास्ट पेजटा खोलुची सेटा ही तुम होम पेज तापर अदर ऑप्शन को यू मे क्लिक एंड गो बट फास्ट पेजटा को तुम होम पेज बोली कहती है ना नहीं फास्ट पेज इज द होम पेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब अच्छा से कहूँ वेब ब्राउजर वेबसाइट PDA लिंक ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम एड्रेसटा गोटे कौन लिंक टे आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक लिंक ऑन द वेब एड्रेस कहले स्पेसिफिक लिंक को आम कहे आम कहने ये लिंक को क्लिक करके गले तुम आम जगह पहुँचब तो से लिंकटा गोटे स्पेसिफिक एड्रेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेज कौन ए ऑप्शन मान भर कौटा गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जे कि वेब पेज को व्यू कर हेल्प करे बुझेगा साइट होस्ट लिंक ब्राउजर ब्राउजर गोटे एमती प्रोग्राम जे कि आमको वेब पेज व्यू कर हेल्प करे नेक्स्ट द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कॉमन ना कौन मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मिसेक मोडेम कहती मॉड्यूलेटर मोडेम डिमॉड्यूलेटर मिसेक मोडेम ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो URL स्टैंड्स फॉर व्हाट देख ये जगह दुटा डाउट हो गोटे यूनिफॉर्म गोटे यूनाइटेड डाउट हम कि तुम क्लीयर रुह जब मन रोज कॉपी रे राइट नाउ लिखि नियो ओके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेले बेले ऑप्शन है यूनिफाइड भी थाए ओके तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हूँ राइट आंसर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources आ भितर कोटा which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources अच्छा ऑप्शन दे लिंकर प्रोटोकॉल केबल URL नॉन ऑफ दिस एंक भितर कोटा आंसर हम कोटा used following which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet location होची URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रिसोर्स को जे लोकेट करिवो जस्ट आम पूर्व क्वेश्चन कले 19 नंबर 4 होची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 20 नंबर क्वेश्चन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जेनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना रु जना पड़ची कोन हिथिवो इंस्टीट्यूशन वाले INST मार दबनी भूली जो एजुकेशनल institution.edu रहिबो बुझला इंस्टीट्यूशन ने माने लिखाई ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो पिला भावे हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो .INST मार दबो भूली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे .edu लगिबो ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
which is not the feature of internet कोटा इंटरनेट रो फीचर नुहे ईमेल न्यूज ग्रुप चैट डिजाइनिंग नन ऑफ दिस कोटा इंटरनेट रो फीचर नुहे डिजाइनिंग नुहे डिजाइन आम नॉर्मली भी कर परिबा बाकी जहाँ रही गला ईमेल चैट न्यूज ग्रुप एवडा सब किंतु इंटरनेट रो फीचर ओके डिजाइनिंग वी डू द डिजाइनिंग देन वी फॉलो समथिंग इन द इंटरनेट बट डिजाइनिंग टा गोटे इंटरनेट रो फीचर भाया आम कहि परिबा नहीं बुझला प्रोटोकॉल consists of what प्रोटोकॉल एमती गोटे क्वेश्चन आम एवं जस्ट करथिले टीसीपी आईपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following term is not related to internet कोटा इंटरनेट संगे रिलेटेड नुहे लिंक ब्राउजर फंक्शन की सर्च इंजिन हाइपरलिंक लिंक फंक्शन की ना फंक्शन की लिंक ब्राउजर सर्च इंजिन हाइपरलिंक एम समस्त इंटरनेट संगे कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is required to create an HTML document गोटे HTML document क्रिएट करिया पे which of the following is required कौन दरकार हुए HTML document तैयार करिया पे कौन दरकार हुए अच्छा ब्राउजर इंटरनेट टेक्स्ट एडिटर सर्च इंजिन नन ऑफ दिस कौन हबार आंसर कोटा कौन देला दरकार हुए HTML document तैयार करिया पे हमर टेक्स्ट एडिटर दरकार हुए ठीक अछि व्हाट इज इनक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस रे कौन थाए एबे जस्ट कहिथिली मु गोटे यूजर आईडी थाए @डोमेन नेम यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम ऑप्शन नंबर 2 हेजिबो तमर राइट आंसर ओके व्हिच अमंग एटी फॉलोड बाय र मीनिंग जानि सर तमे जणे आगर रहबो जणे ता पर रहबो समथिंग ए फॉलोड बाय बी त माने बी फॉलो करूची ए को ए बी ए फॉर्मेट रे समान रहबे ओके which of the following is a search engine कोटा गोटे सर्च इंजिन इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्लैश गूगल फायरफॉक्स ऑल ऑफ दिस तुम जानी पारछ तुम गूगल ले जिंस सर्च करो गूगल मार के देखो जो तुमरो फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एवडा तुमको सर्च इंजिन भला लागि परंती किंतु एवडा सर्च इंजिन होय एवडा सब ब्राउजर एथि जाई कि हम गोटे सर्च इंजिन को जाए जेमति गूगल को जिबा पई हमें कोन क्रोम को जाए कि ता धरे ऑप्शन थाए तुम राइट साइड कॉर्नर रे थाए नोटा 12 बटन खंड ऑप्शन थाए तार यूट्यूब थाए आ ड्राइव थाए एमती सब गूगल गोटे ऑप्शन थाए ता धरे क्लिक करके तापर गोटे सर्च बार आसे तापर हम इसरे सर्च करे है ना नहीं तो सर्च इंजिन होची गूगल अने माने कोन ब्राउजर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए चैट इज व्हाट चैट तुम जानि छे तुम चैटिंग करछो चैटिंग तुम कोन करछो कन्वर्सेशन करछो an internet standard that allows user to upload and download file that is not chat a type of conversation that takes place on the computer eta hi paribo next dekho an online area in which users conduct written discussion about a particular subject semti hi paribo semti kichh man nahi the transmission of message and files via a computer network none of the above eta सब माने एमाने लागु चंती transmission of message and files hi paribo files no chat कहले particular conversation कथा हम कहूचे ए दिनका लागिबे ठीक बट मोस्ट एक्यूरेट होची ऑप्शन नंबर 2 a type of conversation that takes place on a computer okay next question को चला a dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria a dash is the term ए मान को भीतर को term ता use a search engine returns a web page that matches the search criteria को जति मैच करूची लिंक तो नहीं ब्लॉक hit is that term hit is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria ठीक अछि क्लिक करि गल त हमर हिट बोली कहंती the option is hitted next question को चला 29 number question which of the following is true statements about modem विषय रे को स्टेटमेंट ता ठीक अछि बोली हमको पछरछि modems use the telephone line right modem stands for modulator and demodulator again right modem are no longer used in secure network nahi semte nahi a modem's fastest transfer rate is 9 option 1 and 2 ए दिटा को ठीक अछि तो option 1 and 2 हे जबो right answer what is URL a computer software program a type of programming object the address of a document or page on the world wide web and www an acronym for unlimited resource for learning a piece of hardware nice question URL होची तमर गोटे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम कहले ताले गोटे एड्रेस टे हन नै पर्टिकुलर गोटे लिंक को जाई के हम जिनसटा पाउचे एटा हिबो तमर द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एटा गोटे पर्टिकुलर एड्रेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चला
30 नंबर ऑप्शन नंबर 3 हे जिवो राइट आंसर. A dash allows a or an allows you to access your email from anywhere. कोठु भी तुम ईमेल को एक्सेस करि परिबो. ठीक अछि. फोरम वेब मेल इंटरफेस, ए वेब मेल इंटरफेस ही मेसेज बोर्ड वेब लॉग नुहे वेब मेल इंटरफेस. ओके माने तुम नॉर्मल तुम मेल खोलले ही तुम ईमेल को को भी जगह रो एक्सेस करि परिबो. Dash is the encompassing term that involves the use of electronic platform intranets, extranets and the internet to conduct a company's business. E-commerce, e-marketing, e-procurement, e-business, none of the above. Nice. तमरा e-commerce कहंती आको. Okay. E-commerce is the encompassing term that involves the use of electronic platforms like intranets, extranets and the internet to conduct a company's business. E-commerce कहंती. Through the internet you are doing the business. A device needed to communicate with computers using telephone. A device needed to communicate with computers using the telephone lines. Telephone lines use करा हबो disk, CPU, modem, VDU, none of the above. एटा एमती क्वेश्चन हम डिस्कशन करि सारलेनी है ना नहीं कौन ताको मोबाइल थ्रू रे जो तुम टेलीफोन थ्रू रे जोटा होची मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इंटरनेट कनेक्शन भी जाथे आसे मोडेम ही जो तुम राइट आंसर. 33 राइट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो. If you receive an email from someone you don't know, what should you do? तमे गोटे एमती गोटे एड्रेस रू मेल आसु तुमको जो जो जार एड्रेस की तमे जानि न तो तुम सेठी कोन करबा उचित. ओके फॉरवर्ड इट टू पुलिस इमीडिएटली नहीं ता संगे छेड़खानी करबो ही नहीं. ओके डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट यू कैन डू दैट. डिलीट कलो खोललो नहीं डिलीट कर दलो तुम पई एटा सेफ जोन गोटे. ओपन इट एंड रेस्पोंड टू देम सेइंग यू डोंट नो देम. एतो सब काम जा बागता हे सरथिवो. रिप्लाई एंड आस्क देम फॉर देयर पर्सनल इनफॉरमेशन. किछि आवश्यक नहीं तुम मौसी पो मांडू नुहे तार इनफॉरमेशन जानी तुम किछि करबनी बरं तुम लिंक क्लिक कला तुम सब जिनस हैक हो जाइथिबो. ओके रिप्लाई एंड टेल देम यू वांट टू कीप इन टच देम कोन पई मुंडा कुंडी होची किछि आवश्यकता नहीं. डिलीटेड जस्ट विदाउट ओपनिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें कौन पे यूज करें. टॉकिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेटिंग पर्पज, लाइव कन्वर्सेशन, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव. कथा पे यूज करें कम्युनिकेशन पर्पज थाए लाइव कन्वर्सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टॉकिंग टू ईच अदर कम्युनिकेटिंग पर्पज लाइव कन्वर्सेशन सब तो कहीं यूज है आमर कथबार्ता यूज करा हुए कम्युनिकेशन पर्पज थाए लाइव कन्वर्सेशन ऑल ऑफ द अबव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सब तो कहीं यूज करा हुए. नेक्स्ट देखो जीमेल बिलोंग्स टू व्हाट. जीमेल बिलोंग्स टू ग्रेट मेल, गूगल मेल, याहू मेल, गोफर मेल. मैं जानी जीमेल माने गूगल मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला which of these is not a means of personal communication on the internet. Which of these is not a means of personal communication on the internet? Chat, instant messaging, electronic mail, none of these. कोडा नुहे नॉट सॉरी कोडा नुहे नॉट को संग संग आगे हाईलाइट करिवो बेले बेले नॉट हमर इग्नोर हो जाए. नॉट को हाईलाइट करिवो. कोडा नुहे मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट रे पर्सनल कम्युनिकेशन में कोडा यूज हुए नहीं. या पछे तो यस तो तमर हे जिवो इंस्टानल्स हे जिवो. बाकी इंस्टेंट मैसेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट ये सब यूज करा हुई. FTP स्टैंड्स फॉर व्हाट. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर. एट तमरा FT फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. 38 ऑप्शन नंबर 1 हे जिवो राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये गुडा का फुल फॉर्म गुडा का मन रखिबो. ओके 38 or 39. Which of the following is not used to browse and search for information on the internet? कोटा is used. कोटा use करा हुए. Edura, Netscape, FTP, Telnet, none of the above. Netscape use करा हुए. Which of the following will be used if a sender of email wants to bold, italics, etc. the text message? Rich signature, rich format, plain text, rich text,
प्लेन फॉर्मेट अच्छा से कहूँ जे मेसेज जे सेंड करुच्ची से कौन कर इमेल टाक से बोल्ड इटालिक्स ये सब किसी ऑप्शन चेंज कर चाहिए बोल्ड कर इटालिक कर अंडरलाइन कर ये सब किसी चेंज से फॉर्मेट आने को चाहूँगी टेक्स्ट फॉर्मेट रे तो से कौ जिनसा यूज कर रिच टेक्स्ट बोले ऑप्शन था ताकू एनाबल कर द प्रोसेसर ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज व्हाट किसी जिनसर ट्रेडिंग करें यूजिंग इंटरनेट ताको आम कौन बोली कहवा ई सेलिंग एंड बाइंग ई ट्रेडिंग बोली कहवा इंटरनेट यूज करके जहाँ करुचे ई लगे से करवा केते जिनस आसीगलानी तुम ई बुक्स आसीगलानी तमें कौन तुम फिजिकल बही को मेल न पढ़ी थ्रू इंटरनेट यू आर रीडिंग समथिंग on your phone or on your laptop or on tablet any kind of device you have. The electronic meeting system is known as what? Electronic meeting system. Telebanking, teleshopping, teleofficing, teleconferencing, none of this. तो तुम हो teleconferencing. Which of the following must be contained in a URL? Which of the following must be contained in a URL? URL रे कोड़ा था a protocol identifier, the letter www. The unique registered domain name www. And the unique registered domain name a protocol identifier www. And the unique registered domain name. अच्छा which of the following must be contained in the URL कोटा URL थाए ही थाए protocol identifier थाए www थाए unique registered domain name थाए पांचटा थाए सबू तक थाए ओके 4344 नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो dash appearing on the web page opens another document when clicked कोटा वेब पेज था जो क्लिक कला अच्छा गोटे सर्टन लिंक अच्छी ताको तुम क्लिक सर्टन तुम ब्लू ब्लू होगी थाए तुम तो क्लिक कला बस तुमको आ गोटे वेब पेज को नहीं जाए आ गोटे डॉक्यूमेंट खोल दिए तो तुम हाइपर लिंक कौन आंकर यूआरएल हाइपर लिंक रिफरेंस हाँ हाइपर लिंक कहती ठीक अच्छे नेक्स्ट ऑप्शन चलो इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेशनल पिन इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारे बहुत थर which of the following cannot be a part of an email address period space @ none of this कोटा which of the following cannot be a part of email address कोटा email address गोटे पार्ट हो पार ना तुम गैप दे पारनि बाकी सब हो पार डट दे पार नंबर्स दे पार @ सब दे पार गोटे गैप रखिक गोटे कौन लिखी सेमती ना गैप दरकार हो कर दियो कि कौन बट तुम गैप रखिक मनकर मुझे मिश्र स्पेस बनजा @gmail.com सेमती हो पारनि मिश्र _ बनजा लिखी दी मनकर that could be possible. A website is a collection of dash. Website टा कौन collection of graphics ना programs ना algorithms ना web pages ना chats. Website तमर कौन website is the collection of web pages. Web page को मिसे कि website format में. A cookie stores information about the user's web activity, stores software developed by the user, stores the password of the user, stores the commands used by the user, none of this. Cookie माने होची बिस्कुट नुहे cookies माने कहलो जो रिसेंट तुम यूज करथवा जिंस गुडा स्टोर हेकी रहे जो इन्फॉर्मेशन गुडा को से होची तमरो कुकी केबे केबे तमरो आस्ते भी गोटे जगह अलाउ मारिया पे न मारिया पे मैंने छोट छोट तुम जहाँ यूज कल तुम कौन स्टोर होगी रही जाए तुम कौन तुम देखी जो तुम फाइल थाए जो फोन री से गोटे कुकी बोले गोटे ऑप्शन हो जाए मैंने रिसेंट तुम जहाँ यूज कर से गुड़ाक कौन इनफर्मेशन थाए तुम भाव तुम कौन कर देखी पार ना बट तारे किसी स्टोर होगी रोचे जमी मनकर किसी गोटे सर्च कल किसी गोटे शैम्पू प्रडक्ट होगा कि किसी गोटे प्रडक्ट तुम सर्च कल तो तुम किनिया चाहो बोली कौन देखो से जिनसा तुम करेन्ट रिसेंट आड गुड़ाक सब आसो इंस्टाग्राम चलने से जिन गुड़ाक आसो तुम भावे मुझे यहाँ सर्च करी अमुक अमुक ऐप ये केमती आसला माने कौन से जिनसा तुम स्टोर होगी रोचे कौट ना कौट है ना द www is made up of the set of interconnected dash that linked together over the internet. www विषय आम जस्ट पढ़ले वर्ल्ड वाइड वेब एटा कौन कोटा कर हाँ 49 ठीक अच्छे से कौन करे ना मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट लिंक टुगेदर ओवर द इंटरनेट ओके इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द इंटरनेट केबे डेवलप है इंटरनेट हमर 1950 1950s टेलीनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल टेलीनेट कौन साउंड टेक्स्ट इमेज एनिमेशन डिजिट्स टेलीनेट कहले तुमरो
टेक्स्ट फॉर्मेट रे थिबो कंप्यूटर पोर्टल टेक्स्ट सब जिन टेक्स्ट फॉर्मेट रे थाए थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली माने गोटे जगह अच्छी से आउ जन कंप्यूटर रिमोटली माने तुम कंप्यूटर गोटे जगह मो कंप्यूटर गोटे जगह बट आई एम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर एटा को एडमिनिस्ट्रेशन एटा को टेलनेट कहन तुमरो है ना नहीं नेक्स्ट 53 कहला द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड व्हाट द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड अच्छा एफटीपी वर्ल्ड वाइड वेब माने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना www ना टेलीनेट ना गोफर ना नन ऑफ दिस ओके तो तमर होची www इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मल्टीमीडिया इंटरफेस नेक्स्ट है HTTP रिक्वेस्ट कंटेंट्स डैशपैड ए जो HTTP रिक्वेस्ट एथरे केतरा पार्ट थाए बोले हमको पचाउची तीनटा पार्ट थाए नेक्स्ट ऑप्शन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस .com .edu .mil .net .org तो तुम जो .com देखी थी सब वेबसाइट गुड़ा था समथिंग समथिंग .com है नहीं ताकि तुम कौन सब कौन वाला प्रॉफिट बिजनेस यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेसेस तुमको नॉर्मल तुम यूज कर तुमको किनिया को पड़ो है ना नहीं ऑथराइजेशन हैला पर तुमरा .com हो जाए द डिवाइस दैट रिकनसाइल्स द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड फोन्स इज द डैश LAN TCP/IP वन रीडर स्कैनर मोडेम मोडेम एटा ना हाँ फोन और कंप्यूटर विद डिफरेंस होची मोडेम रो व्हिच ऑफ द फाउंडर ऑफ हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक व्हिच इज करंटली द नंबर वन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया यू ऑलमोस्ट नो इट है ना नहीं कौन है आंसर मार्क जुकरबर्ग जी के व्हाट्सएप भी किन से द डैश सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट users to exchange their views on some common topics the dash service allows a group of internet user to exchange their view on some common topic अच्छा नेटनेट मिलनेट यूजनेट टेलीनेट नन ऑफ दिस एटा तुम कर परबा मेथड क्वेश्चन करि सरलेनी कोन एटा कोन होबे आंसर यूजनेट dash is a collection of web page and dash is the very fast page that we see on opening an website एटा भी हम एमती क्वेश्चन भी हम करि सलन डिस्कशन है ना नहीं वेब dash is a collection of web page ए क्वेश्चन भी हम करिचे आ फास्ट पेज टा कोन कोन ए क्वेश्चन भी हम करिचे दिटा को मिसेई कि देला गोटे क्वेश्चन वेब पेज रो कलेक्शन को वेबसाइट कहंती आ फास्ट पेज टा को होम पेज कहंती कोट रहला एटा ऑप्शन देखो वेबसाइट होम पेज ऑप्शन नंबर 2 हे जबो तुम राइट आंसर ओके in HTML B and /B tags display the enclosed text in को कलर रे थाए अच्छा 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 HTML ए जिनसा को कलर रे थाए ए फॉर्मेट गुडा को कलर रे हेकी थाए ब्लैक कलर बैकग्राउंड कलर ब्राइट कलर बोल्ड कलर ऑप्शन रहे लगे सबटे ना यार चारटा ऑप्शन दीची मोर बोल्ड ऑप्शन है उडा खला बी रु जानि परथि ऑलरेडी स्मार्ट छडा तुम नेक्स्ट कहला द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ हाँ लास्ट 3टा लेटर जो डोमेन नेम रे डॉट समथिंग जो थाए .com हे गला .edu हे गला एडा को कोन डिस्क्राइब करंती बोली पचाउची ऑर्गेनाइजेशन नेम ताको तो डोमेन नेम बोली कहंती व्हाट इज एम कॉमर्स माने मशीन कॉमर्स ना मनी कॉमर्स ना मशीन कॉमर्स 62 ऑप्शन नंबर एम नहीं 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 मशीन कॉमर्स ना मोबाइल कॉमर्स मशीन कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स मनी कॉमर्स मार्केटिंग कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स अब ओके इन HTML tags consist of keywords enclosed within HTML को फॉर्मेट से माने एनक्लोज फॉर्मेट कोथि थांती फ्लावर ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट कोथि थांती तुम यूज कला देखि दिबा ना नहीं एंगुलर ब्रैकेट थांती एमती एमती थाए ता भीतर तुमरो स्लैश मारा जिनस थाए व्हाट इज अ स्पाइडर होची जे हमरो घरे बुढ़ियानी चले ताको स्पाइडर कहंती द कंप्यूटर वायरस अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट a hacker who breaks into corporate computer system
an application for viewing website, none of this. एगुड़ा तुम कौन कहल माने जे तुम यूज कर जानी शुणी ताहले कर परिबो अदर तुम दिन आइडिया लगे परिबो कंप्यूटर क्वेश्चन कथा कहूची एगुड़ा पर्टिकुलर तुम जानी थिले ही कर परिबो है ना नहीं. एन एप्लिकेशन फॉर व्यूइंग वेबसाइट 64 नंबर 4 आंसर देखिदेली. टेलीनेट कौन? टेलीनेट होची सर्च इंजिन ब्राउजर प्रोटोकॉल गेटवे. टेलीनेट कौन? होची प्रोटोकॉल. IPv4 एड्रेस इज केते बिट रही थाए 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट. V4 होची 32 बिट रो सबुडा टिके देखि दबो हला कोडा केते केते बिट मन हो एठी IPv4 पड़ची आ थोड़ा अलग कम पड़ परिबो तो सब तो देखि दबो तमे गोट थोड़ा सर्च मार की. हां कला मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? मोबाइल कॉमर्स एठी हमरा एम कॉमर्स पड़थिला ना. Mobile commerce is best described as what? The use of kiosk in the marketing, transporting products, buying and selling goods and services through wireless hand or handheld devices, wireless hand or held devices, using the notebook pieces in the marketing, none of the above. Nice question. राउस तमरा जिनस किना बिका पई buying and through wireless or handheld devices. Option number 3 is तमरा right answer. Next देखो each IP address each IP packet must contain प्रतिटी IP पैकेट रे निश्चित भाव में थाए कौन थाए सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस नॉन ऑफ द अबव. सोर्स एड्रेस भी रहइबो डेस्टिनेशन एड्रेस भी रहइबो. ऑप्शन नंबर 3 हे जो 68 ऑप्शन नंबर 3 हे जो राइट आंसर राइट. Which of the following is the new format for the internet that is upgrade to the internet's main communication protocol IP? Which of the following is the new format for internet that is an upgrade to the internet's main communication protocol IP? IPv5, IPv4, V4 plus, V6, V7. अच्छा एटा तमर हे जिवो IPv6. जो तो क्वेश्चन डिस्कशन कराला तो क्वेश्चन तमे थरोली देखि दबो ता संगे रे यार जो थ्योरी पोर्शन रहला तमर जे बुक दरकार कहबो म तुमको बुक प्रोवाइड कर दी माने ई बुक प्रोवाइड कर देबी. ता छडा जे तमे निजर को बुक रु पढुचो चलबो बट बस टे ट्राई करबो अपडेटेड बही रु पढिया बे बहुत पुराना बही रु पढिबोनी अपडेटेड बही रु पढिबो न तुम चाहिले म तुमको ए बुकटा टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर देबी. तुम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जिवो. या छडा तमरो कंप्यूटर आ किछि पोर्शन भी रहला एटा इंटरनेट अवेयरनेस थिला आ किछि पोर्शन भी रहला तुम सेगुड़ा भी कौथुरु प्रैक्टिस करने चेष्टा कर आदि पारुच कौन से टेस्ट दियो अधिक अधिक टेस्ट दियो ना जब तुम सरीनी थ्योरी तुम थ्योरी पढ़ा फोकस कर बट जमी आम कल पढ़ुले स्ट्राटेजी डिस्कसन करुले सेम तुम कौन कर ना अधिक अधिक टेस्ट दवा सांगे देख टेस्ट देला बेले टेस्ट तुम दब ही निजक तर्जमा करने बुझेगा. तो टेस्ट देला बेले जान मनकर यही पोर्सन मोर है पोर्सन मतलब देखा दरकार तुम कौन कर ना तार थ्योरी को जीव सांगे सांगे टेस्ट देवार महत्व या दिन को मनकर गोटे टेस्ट देल भी गोटे टेस्ट मनकर तुम 100टा क्वेश्चन देछि तुमको मनकर 80टा क्वेश्चन आसला आ जो रिमेनिंग 20टा क्वेश्चन रहला से 20टा क्वेश्चन को इन डेप्थ जीव तार भीतर को कोठु आसीछि तार इर्द गिर्द आउ कोन हेई परिबो आ जो 80टा क्वेश्चन कल 80टा क्वेश्चन ने गोटे क्वेश्चन में 4टा ऑप्शन हला 8 4 32 320टा ऑप्शन तुम पाइलो सॉरी से 3टा 20 से जो 320टा ऑप्शन रो भी तुम हिस्ट्री जाने चेष्टा करिवो बुझला. हेले तुम प्रिपरेशन गोटे कोन कंप्लीट वे रे पार जहाँ आसूची तो आसूची जहाँ आसुनी तक आम देखा आम से टेस्ट दिए बुझेगा. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करार मीनिंग भी सैया तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कला बेले एथुर मनकर 69टा क्वेश्चन मनकर धरिक चलो 60 क्वेश्चन मनकर 20टा मनकर तुमको आसला आ बाकी 40टा मनकर तुमको आसला 40टा तो नुह 49टा मनकर तुमको आसलानी बुझेगा. तो आसलानी बड़ कथा नुह कीप द साइंटिफिक टेम्परामेंट ये 40टा क्वेश्चन कि 49टा क्वेश्चन मुझे पढ़ी से सेम क्वेश्चन को आउे देखी किए जानला सेम क्वेश्चन न पढ़ी बोली सेम क्वेश्चन को देखिए बा थ्योरी को देखिए जमी आम IPv4 करुले V6 रहीगला कहार कहार आउ जहाँ रहीगला तो कमेटी देखी देखीदबा ये आम IPv6 आंसर है ये आम IPv4 आंसर है. IPv4 30 बिट कला यार केते नंबर बिट केतेटा बिट एडा आम केमी जानबा जी जानी तो जानी जानी से कौन कर टे सर्च करदेव जानीज ओके. या छड़ा जब मोठू आउ किसी हेल्प दरकार बोल लगुच जस्ट लेट मी नो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. तुम कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम को भी हैंडल निज क्वेरी पचारे मु पूरा पूरा चेष्टा करी तुमको हेल्प करने. ओके सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.
Do well.